Good morning, students. So, today we'll read the first poem of class 8th Honeydew, The Ant and the Cricket. And this poem, it has been adapted from Aesop Fables. Now, let's have a quick introduction about this poem. So, this poem, The Ant and the Cricket, it is a fable. Now, the question arises here that what is a fable? A fable is a short story often with animals as characters. ठीक है, जिसमें animals क्या होते हैं, characters की तरह होते हैं इन stories में, and they convey a moral. ठीक है, ये जो short stories होती है हमेशा इनमें कोई ना कोई moral होता है. So this poem is about an ant and a cricket. ठीक है, किन के बारे में है, ant and cricket के बारे में है, and contains an idea of far-reaching significance which is as true as of a four-legged cricket as of a two-legged one. So this poem, ठीक है, what is the meaning of far-reaching significance? It gives us an idea of far-sightedness. ठीक है, what is the meaning of far-sightedness? कि हमें दूर की सोचना चाहिए. ठीक है, दूर का सोचना चाहिए. One should think of one's future. So, and this idea, ठीक है, of thinking of one's future, ठीक है, it is, we can say it is right for the four-legged cricket also. Now, what is a cricket? Cricket is an insect which belongs to a grasshopper family. ठीक है, तो ये आइडिया जो है ये किस पे राइट बैठता है, किस पे सेट बैठता है, फोर-लेग्ड क्रिकेट के लिए भी एंड एज ऑफ टू-लेग्ड one here. Now, who is two-legged here? Two-legged, the poet has very smartly referred to humans here. ठीक है, सो ये जो आइडिया है ऑफ फार साइटेडनेस, दूर की सोचने का, फ्यूचर की सोचने का, ये ह्यूमंस के लिए भी बिल्कुल करेक्ट बैठता है. ठीक है, ह्यूमंस ऑल्सो है ना, दे मस्ट हैव फार साइटेडनेस, ठीक है, टू हैव अ पीसफुल, ठीक है, फ्यूचर. सो द मॉरल बिहाइंड द पोएम इज लिव टुडे बट सेव फॉर टुमारो. ठीक है, सो दिस इज द मोरल, है ना, कि आज जियो अच्छे से बट हमें कल के लिए क्या करनी चाहिए, सेविंग्स भी करनी चाहिए. सो देयर वाज अ यंग क्रिकेट which is used to sing day and night during summers and springs and did not save any food for winters. ठीक है, स्टोरी किसकी है, एक एंट एंड क्रिकेट की है. सो देयर इज ए क्रिकेट, उसको क्या पसंद है, गाना बहुत पसंद है. ठीक है, तो वो समर में और स्प्रिंग में क्या करता है, दिन रात गाना ही गाता रहता है. एंड डिड नॉट सेव एनी फूड फॉर विंटर्स. ठीक है, और अपनी इंजॉयमेंट में ना वो फ्यूचर के लिए या विंटर्स के लिए अपना खाना जो है वो स्टॉक करना ही भूल जाता है, वो नहीं करता है. When the winters came, he looked for food and went to an ant. ठीक है, जब विंटर आई अब उसके पास तो खाना है नहीं. ठीक है, so he started looking for food, है ना, and finally he went to an ant. किसके पास गया, ant के पास गया. Now the ant, है ना, she refused to give him food. ठीक है, उसने उसको मना कर दिया कि मैं खाना नहीं दूंगी. And asked him to sing and dance to send away the winters. ठीक है, और ant ने उसको टॉन्ट किया कि जैसे तुमने स्प्रिंग में, है ना, और विंटर्स में अपना मन बहलाया गाना गाकर, ठीक है, विंटर्स में भी ऐसा ही करो. द क्रिकेट अंडरस्टूड दैट ही डिड नॉट थिंक फॉर फ्यूचर, है ना, फाइनली ही अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ फार साइटेडनेस, है ना, कि उसने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, एंड दैट इज वाई ही इज सफरिंग एट द प्रेजेंट. वन शुड ऑलवेज सेव फॉर टुमारो, है ना, हमें हमेशा अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर poem. So in this poem we have 4 stanzas. So firstly we'll read the first stanza. Now see, a silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? Now, this is a poem about a silly young cricket. ठीक है, so this silly is foolish. Young cricket, he is very fun-loving. ठीक है, so this foolish, fun-loving cricket, he is accustomed to sing. He is used to singing. उसको गाना गाना बहुत पसंद है.
through the warm sunny months of gay summer and spring. ठीक है, so he has spent his summer and spring season very pleasantly by just singing. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. ठीक है, now winter has arrived. ठीक है, अब सर्दियाँ आ गई हैं. And now he has begun to complain. He has begun lamenting. ठीक है, उसने अब दुख मनाना शुरू कर दिया है that at his home or in his cupboard everything was empty. ठीक है, neither he had shelter nor he has food. ना ही रहने के लिए उसके पास घर है, shelter भी नहीं बनाया उसने, एंड अब उसके पास खाना भी नहीं है खाने के लिए. ठीक है, नाउ द विंटर हैज अराइव्ड. सो द क्रिकेट है ना, तो दिस इज अगेन आई जस्ट वांटेड टू रिपीट दिस 4 lines that the poem is about a silly young cricket. है ना, the cricket, he was only singing all day long and used to enjoy his good times during summer season. He didn't plan for the future. ठीक है, अब उसने अपने फ्यूचर के लिए प्लान नहीं किया है. द क्रिकेट फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल एज द विंटर सीजन अराइव्ड. ही फाउंड दैट ही हैड नथिंग टू ईट नॉर हैड ही केयर टू मेक अ शेल्टर फॉर हिमसेल्फ. ठीक है, ना ही उसने अपने आप के लिए शेल्टर बनाया है, वो भी नहीं है उसके पास रहने के लिए. नॉट अ क्रम टू फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉर अ फ्लावर कुड ही सी नॉर अ लीफ ऑन अ ट्री. ठीक है, सो ही कुडंट सी even a leaf on a tree, है ना, not even a flower, not even a crumb is piece, है ना, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. सो नॉट इवन अ crumb, ठीक है, खाने के टुकड़े वो भी नहीं उसको मिल रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग वॉज कवर्ड विद स्नो. ओ what will become of me, says the cricket of me. Now he is concerned. ठीक है, कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि ना उसके पास रहने के लिए घर है, शेल्टर है, और ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ है. I hope the first stanza is clear to you. Now let's see our second stanza. At last, by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow. He would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Now, what he thought, at last he was starving, है ना, he was starving to death, and he was famine. Famine is scarcity of food. He didn't have food, है ना, उसके पास खाना नहीं था, and secondly he was starving also. He made a bold effort, means somehow he gathered courage. ठीक है, उसने अपनी courage सारी gather की. All dripping with wet. ठीक है, he started his journey. ठीक है, all dripping with wet. Now he was wet in rain and all trembling with cold. He was shivering in cold. Away he set off to a miserly ant. ठीक है, he made his way to meet an miserly ant, though he didn't have much expectation from the ant, because the ant was miser. Miser means ant क्या थी, कंजूस थी, उसको पता था, तो उसको ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी कि वहाँ से उसको क्या मिलने वाला है. To see if to keep him alive he would grant him shelter from rain. है ना, he just wanted to see, है ना, कि वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या कर सकता है, कि क्या पता एंट उसको क्या दे दे, शेल्टर दे दे, है ना, रेन से बचने के लिए. एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, है ना, कुछ थोड़ा बहुत उसको खाने के लिए कुछ दे दे. ही विश्ड ओनली टू बोरो. ठीक है, वो क्या करना चाहता था, सिर्फ बोरो करना चाहता था, उधार लेना चाहता था. ही वुड रिपे इट टुमारो, है ना, वो सिर्फ उधार लेना चाहता था. एंड व्हाट इट डिसाइडेड, कि मैं तुम्हें बाद में पे कर दूंगा. इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, है ना, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो अदरवाइज भी वो किससे, भूख से, है ना, और इस सॉरो से, इस सैडनेस से वैसे भी मर जाता. सो द क्रिकेट ही थिंक्स ऑफ गोइंग टू ए माइजर एंड टू बोरो फूड एंड टू गेट shelter. Then the cricket knocked on the ant's door asking for help. He wished to borrow some grain from her and to spend a day or two in her hole during the rainy days. His intention was to pay her back later on. ठीक है, तो उसका इंटेंशन क्या था, कि वो बाद में एंट को सब कुछ वापस पे कर देगा. So let's proceed to our third stanza. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm,
quoth the cricket, not I. Now, what the ant said in the very first line, says the ant to the cricket, I am your servant and friend, that I will help you to work. ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने में help कर सकती हूँ. But we ants never borrow, we ants never lend. But the ant says, ठीक है, the ant says that it is the rule of ants, they neither borrow from somebody nor lend to somebody. ठीक है, ये उनका रूल है. ना ही वो किसी से उधार लेते हैं और ना ही किसी को उधार देते हैं. सो एंड्स दे आर रियली हार्ड वर्किंग क्रीचर्स एंड दे सेव फॉर फ्यूचर. ठीक है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है एंड्स और वो अपने फ्यूचर के लिए सेव करते हैं. सो बट नाउ द एंट आस्क्ड, है ना, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, डिड यू सेव नथिंग फॉर द फ्यूचर, क्या तुमने विंटर्स के लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा? आस्क्ड द एंट. So when the weather was warm, quoth the cricket, not I. So she asked the cricket in a very surprising manner if he had not saved anything for the winter. है ना, कि क्या उसने विंटर के लिए अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा है? To which the cricket replied in negative. है ना, कि उसने विंटर्स के लिए कुछ भी नहीं बचाया है. She asked him the reason. है ना, वो उससे रीज़न पूछती है कि तुमने ऐसा, है ना, क्यों नहीं किया, तुमने अपने फ्यूचर के लिए सेव क्यों नहीं किया. Now see your stanza number 4. What the cricket said, my heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay, you sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. Now what he replied that he was so busy enjoying his life. है ना, जब समर थी तो वो दिन रात क्या करता था? गाने गाता था. So he replied that he was so busy enjoying his life, he didn't bother to save or put by anything. है ना, कि उसको ध्यान ही नहीं आया, उसने फिक्र ही नहीं की कि विंटर्स आने वाली, मैं अपने लिए कुछ सेव कर लूँ. So on hearing the cricket indulged in dancing and singing and making merry. ठीक है, जब एंट ने ये सुना, है ना, कि उसने अपना सारा जो समर थी वो कैसे बिताई है, सिर्फ डांस करने में, गाना गाने में और खुशी खुशी टाइम स्पेंड करने में. देन द एंट taunts the cricket to try dancing and singing once again during the rough times. है ना, कि अब जो ये रफ टाइम आई है, अब जो मुश्किलें आई हैं, तो तुम एक काम करो, इन मुश्किलों को भी तुम क्या कर दो, डांस करके और गाने गाकर भगा दो. So the ant taunts the cricket. Now thus ending, है ना, let's see in the ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Fox called this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Now in the ending, the ant told the cricket to go away from there. He sadly went away from there. है ना, बेचारा वो वहाँ से चला गया. Some people call it merely a story. है ना, Fox call this a fable. है ना, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ क्या है, कहानी है, ये स्टोरी है. I'll warrant it is true, but I can assure you that it is true. So in the last line, है ना, now see the last line. Some crickets have 4 legs. 4 legs crickets are the insects, and some have 2. So these 2 legs cricket are the humans. है ना, as I told you in the introduction that the poet has referred to humans by saying 2 legs cricket. So in the last line, the humans are being referred here because humans also, they spend their time in life sitting idly without thinking of their future. है ना, when they are happy, they sit idle, they won't think of their future, they won't they won't care of their future. So in conclusion, we can say that we, है ना, only we are responsible for our future. So we must not spend our good times sitting idle. है ना, जो हमारा जो अच्छा टाइम है हमें खाली बैठकर वो नहीं बिताना चाहिए. We must also secure our future against the bad times also. है ना, फ्यूचर का किसी को नहीं पता, है ना, आज क्या है और कल क्या होगा, तो हमें अपने फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, चीज़ें सेव करनी चाहिए, सिक्योर करनी चाहिए. So I hope the poem is very much clear to you. Let's proceed to the summary.
Now it is a fable in poetic form, है ना? So we have already discussed that what is a fable. Again, I just wanted to tell it to you that a fable is a short story, often with animals as characters, that conveys a moral. So fable is a story often with animals as character that conveys a moral. So this is a poem about a silly young cricket and an ant. So the cricket was only singing all day long and used to enjoy his good times during summer season. He didn't plan anything for the फ्यूचर है ना. वो समर में कैसे सारा अपना टाइम खुशी खुशी बिता देता और अपने फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करता. When winter arrives, cricket couldn't find a small amount of food to eat. और जब सर्दियाँ आती हैं तो उसको खाने के लिए कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता. So the cricket thinks of going to miser ant to borrow food and to get shelter. वो क्या सोचता है किसके पास जाऊँगा? ant के पास और उससे क्या मांगूंगा? Borrow करूँगा food and shelter. Then the cricket knocked on the ant's door asking for help. है ना, उसने ant से help मांगी. So the ant gives a very important lesson of life during its conversation with the cricket. है ना, जब उन दोनों की आपस में बात हो रही है तो हमें भी उससे क्या एक बहुत important message मिलता है, lesson मिलता है. Ant says that ants neither borrow from somebody nor lend to somebody. है ना, ना ही वो किसी से उधार लेते हैं और ना ही उधार देते हैं. Ants are hard working creatures and save for future. है ना, वो hard working और अपने future के लिए वो save करते हैं. The ant asked the cricket what it was doing during happier times. है ना, जब वो खुश था, जब समर थी, वो तब क्या कर रहा था. On hearing the cricket indulge in dancing and singing and making merry, the ant asked the cricket to try dancing and singing once again during rough times. जब उसने सुना है ना, so she was really angry, है ना, कि उसने सारी अपनी समर कैसे बिताई है सिर्फ enjoy करके. तो उसने क्या कहा कि जब अब बुरा टाइम आया है तभी भी डांस ही कर लो, है ना. So now what is the moral of our poem? That we should happy moments but should not ignore our future, है ना. We should be happy in moments, है ना, खुश रहना चाहिए. जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन हमें अपने फ्यूचर को इग्नोर नहीं करना चाहिए. सो केयरफुल प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर एवरीवन एंड इट इंश्योर्स अ सिक्योर फ्यूचर. है ना, फ्यूचर के बारे में हमें ध्यान से केयरफुली प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर क्या हो, अच्छा हो, सेफ हो. सो आई होप द पोएम इज क्लियर टू all of you.